am going to teach you your book Hornbill's poem The Lebanon Talk, which was written by Ted Hughes. What are the main features? The main features of this poem is about the poet, about the poem, summary of the poem, literary devices and conclusion of the poem. So let us start with our first feature about the poet. Edward James Hughes was born on 17 August 1930 and he was an English poet, translator and children writer. Critics frequently rank him the greatest poet and writer of his time in 20th century. The Times ranked him in 4th place among their list of 50 greatest British writer since 1945. Means ये जो आपके मैंने जैसे वहाँ लिखा है कि टेड हग्स, इनका his full name is एडवर्ड जेम्स हग्स और इनका जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ। ये ट्रांसलेटर हैं, पोएट हैं और बच्चों के लिए राइटर माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 20th सेंचुरी के महान कवियों में से इनको गिना गया है। और द टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने जो 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स की जो लिस्ट बनाई उसमें टेड हग्स को 4th प्लेस पर रखा गया। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर पोएम। नाउ about the poem, introduction of the poem, what we are going to study in this poem. The poem Lebanon Talk is about a repaying relationship between Lebanon tree and the goldfinch bird. The tree is yellow, silent and the deathline, and this tree is made alive when the goldfinch bird come to the Lebanon tree. The yellow bird has a shelter on the Lebanon tree and she feeds her young ones. And as soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree is again silent and deathless. मतलब हम इस पोएम में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस पोएम के अंदर एक लेमनम जो पेड़ है, जिसे आप हिंदी में अमलतास बोलते हैं, तो लेमनम पेड़ और गोल्डफिंच बर्ड, ये भी येलो कलर की होती है और इत्तेफाक से जो आपका जो ये लेमनम पेड़ होता है, इसके भी जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, तो दोनों का कलर सेम है। तो दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बताया गया है कि जब तक वो चिड़िया नहीं आती है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल उदासी रहती है। लेकिन जैसे ही जब चिड़िया आती है, उस चिड़िया के बच्चे भी हैं, उस चिड़िया का घोंसला वहाँ पर है, तो जब वो चिड़िया के मूवमेंट से पेड़ थ्रिल होने लगता है, पेड़ हिलने लगता है, मतलब एक तरह से खुशी का माहौल होने लगता है, वो पेड़ फिर से ऐसा लगता है जैसे हरा भरा हो गया। तो लेकिन जब एट लास्ट वो चिड़िया वापस चली जाती है तो फिर पेड़ कैसा हो जाता है? लेमनम ट्री साइलेंट एंड डेथ लाइक, वो वैसा हो जाता है। तो ये हम दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. Now come to the summary of the poem. The poet says that he saw a lebanon tree and whose leaves are yellow and the tree stalk is silent. Tree stalk is silent and it was the day of the September month. It is the autumn season when all the seeds of the tree had fallen. The poet used the word yellow because yellow is he used the word yellow for both sunlight and the leaves. Why he do so? Because yellow symbolizes the silent, death and beauty, and he described the whole explanation of Lebanon tree with this color. Means ये जो कवि जो है वो जाता रहता है, उसको लेमनम का एक पेड़ दिखाई देता है, वो देखता है कि पेड़ की पत्तियां बिल्कुल पीली हैं, सितंबर का मौसम है और ऑटम सीजन है। ऑटम सीजन मतलब पतझड़ का सीजन है, सारे जो बीज है वो सारे बीज नीचे गिरने लगते हैं। और पोएट्स ने क्या किया इसके अंदर? उसने येलो वर्ड का ही, येलो कलर को ही यूज किया है। तो येलो कलर को क्यों यूज किया है? क्योंकि येलो कलर किसका प्रतीक माना जाता है? आपका डेथ का, साइलेंस का, ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है। तो उसने पूरी पोएम को समझाने के लिए उसने येलो कलर का ही यूज किया। नाउ व्हाट हैपेंड अगेन, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? A goldfinch bird
alert and precocious as a lizard, and she sits on the branches of the tree. As she moves towards the thickness of the tree, the young ones started chirping, and they make a vibrating sound with their tail. By this vibrating sound, the laburnum tree become shaken. होता क्या कि फिर वहां पर बिल्कुल साइलेंट आपका पेड़ है, फिर ये जो गोल्ड फ्लिंच जो बर्ड है वो उस पेड़ के ऊपर आती है और स्वीट सा उसका साउंड होता है, और स्वीट से उसका जो साउंड होता है उसके बाद, लेकिन उसको यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया। ऐसे कंपैरिजन उस चिड़िया का कंपैरिजन किससे किया गया? लिजार्ड से किया गया, कि जिस तरह लिजार्ड एकदम बिल्कुल एक्टिव होती है, ठीक उसी तरह जो आपका ये जो गोल्ड फ्लिंच जो बर्ड है वो भी उसी की तरह बिल्कुल एक्टिव है। और बाद में क्या होता है कि ये जो गोल्ड फ्लिंच बर्ड होती है वो अपने जब बच्चों के पास जाती है तो बच्चे वाइब्रेशन करते हैं और उनके वाइब्रेशन से पेड़ के अंदर एक तरह से जान आ जाती है, द ट्री बिकम लाइव। देन द पोएट हैज गिवन टू opposite scenario. In the first scenario the poet says that tree becomes silent and death-like, but in the next he says that the tree gave the shelter to the bird and now it is alive. मतलब पहले सीन में क्या दिखाया गया कि पेड़ बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल डेथ-लाइक है, लेकिन बाद में किसी चिड़िया को शेल्टर देता है, गोल्ड फ्लिंच जो चिड़िया है उसको वो शेल्टर देता है और वो वापस से लाइव हो जाता है। Now what happened? The laburnum tree and the goldfinch bird is the goldfinch bird is comparing with the engine as the bird is feeding her young ones. मतलब यहाँ पर जो laburnum चिड़िया, ये आपकी गोल्डफिंच जो चिड़िया है, इसकी तुलना किससे की गई है? इंजन से की गई है, क्योंकि ये क्या करती है? अपने जो इसके जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को ये क्या कराती है? फीड कराती है, अपने बच्चों को खिलाती है यहाँ पर, इसीलिए इसकी तुलना की गई है। देन शी कम टुवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द laburnum tree, उसके अंदर जाती है, एंड हर द स्ट्रिप डार्क स्ट्रिप फेस कुड बी विजिबल, केवल हम उसके चेहरे को ही देख पाते हैं, एज हर बॉडी इज येलो एंड शी हाइड इटसेल्फ इन द येलो लीव्स, वो अपने आप को, क्योंकि उसकी बॉडी भी येलो है और पेड़ की पत्ती का कलर भी येलो है, तो वो जो बर्ड है वहाँ पर हाइड हो जाती है, वो छुप जाती है। एंड एट लास्ट द she gave a sweet chirping sound and flies and leaves the place and fly away in the infinity sky. It makes the laburnum tree again death-like and silent. So this is the explanation. यहाँ पर हमने समझ लिया कि पेड़ में और उस पक्षी में क्या रिलेशनशिप है। Now come at the literary devices of this poem. There are many use of literary devices. For example, literary devices. The first one is alliteration. I have already explained that alliteration is the repetition of the consonant word. For example, repetition of consonant word. It is the repetition of consonant word. For example, September and sunlight. And the second example is tree and trembles. Tree and trembles. Okay? So this is your first literary device. Second literary device is simile. What is simile?
Metaphor. What is metaphor? It is the indirect comparison. It is indirect comparison. It is the indirect comparison between two things generally used in explain to compare the qualities. Just like the noise which was created by the bird is compared by the machine. So it is the example of metaphor. These are the literary devices, and last point is our conclusion of the poem. To sum up the summary of the Lapanam talk, we learn about the sweet and nurture relationship. What are the sweet and nurturing relationship between the bird and tree, and we came to learn that how they both are important for in their lives, कि किस तरह पेड़ और पक्षी दोनों अपने जीवन में एक दूसरे के लिए क्या भूमिका निभाते हैं, लास्ट में हमको ये पढ़ने को मिलता है. So students, this is the explanation of your poem. Now I am going to give you 3 questions which you have to answer me till tomorrow. Your first question is, who is the poet of this poem? Okay. Then second question is, what are the literary devices that are used in the poem? And third question is, what is the theme of the poem? Okay, these are 3 questions. First question is, who is the poet of this poem? Then second question is, what are the literary devices that are used in the poem? And third question is, what is the theme of the poem? So if you have any difficulties, if you have any problem, you can ask me. Give answer of these 3 questions till tomorrow. Till then, goodbye.